Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 9th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. We'll talk about the State Food Safety Index, followed by amendment of rules for the appointment of Chief of Defence Staff. Then we'll discuss what are green jobs and what are carbon bombs. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स which is released by FSI. So recently, on the occasion of World Food Safety Day, Union Health Minister of India announced the State Food Safety Index Awards. तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई. एक तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड अनाउंस किए गए हैं. सो द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, पहले इसके बारे में जानते हैं. It is developed by Food Safety and Standards Authority of India (FSI) in 2018 and 19. 18 and 19 में पहली बार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था वो डेवलप किया गया था by the Food Safety and Standards Authority of India. The aim of this index is to measure the performance of states on various parameters of food safety. फूड सेफ्टी के अलग अलग पैरामीटर्स पे इसमें स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर किया जाता है. इट ऑल्सो क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एंड अ पॉजिटिव चेंज इन इंडियाज़ फूड सेफ्टी इकोसिस्टम. यहाँ पे जो स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है इसमें 5 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स चूज़ किए जाते हैं. वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा. सेकेंड वन इज़ compliance. थर्ड इज़ food safety infrastructure and surveillance, then training and capacity building, and lastly consumer empowerment. ये ऐसे 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है. नाउ अभी जो हमारा 4th इंडेक्स रिलीज़ हुआ है इसके मेजर हाइलाइट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम लार्ज स्टेट्स कैटेगरी को देखें तो इसमें तमिलनाडु ने लार्ज स्टेट्स की जो लिस्ट है उसमें टॉप किया है, followed by Gujarat and Maharashtra. So in terms of food safety, Tamil Nadu has topped in the last state category, followed by Gujarat and Maharashtra. Smaller states की बात करें, so in smaller states, Goa is a winner, followed by Manipur and Sikkim. UTs में जम्मू एंड कश्मीर टॉप में आता है, followed by Delhi and Chandigarh. This states have shown significant improvement. They are also facilitated. वो states जिनके अंदर significant improvement आई है उनको भी यहाँ पे facilitate किया गया है. Apart from the awards, there are some other important points as well. See, to motivate smart cities to develop and execute a plan, ऐसा plan जिससे कि एक healthy, safe, सस्टेनेबल फूड इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट हो सके, जिसमें वी हैव अडॉप्शन ऑफ वेरियस ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव्स. 11 विनिंग स्मार्ट सिटीज़ ऑफ ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज वर ऑल्सो फैसिलिटेटेड. स्मार्ट सिटी में ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव को ब्लेंड करना, एक हेल्दी सेफ सस्टेनेबल फूड इन्वायरमेंट को क्रिएट करना. देन देयर इज़ ऑल्सो Ayurveda Ahar logo, which basically contains the initials of Ayurveda and Hara. जो फर्स्ट है वो देवनागरी में है और जो सेकंड है वो इंग्लिश में है. So with 5 leaves the symbol of 5 elements of nature that was also launched. इस लोगो को भी लॉन्च किया गया है, आयुर्वेदा आहार लोगो, जिसमें आयुर्वेदा और आहारा के इनिशियल्स हैं. पहला इनिशियल देवनागरी में है, सेकेंड इनिशियल इंग्लिश में है और 5 लीव्स वहाँ पे बनाई गई हैं विच बेसिकली इंडिकेट्स दी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. तो ये लोगो इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी आयुर्वेदिक फूड्स होंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो पाएगी. उन सब के ऊपर आयुर्वेदा आहार लोगो दिया जाएगा.
The guidance document on foodborne disease outlook investigation and microbial process control and sampling and testing of fish and fishery products was also released. एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया है फूड बॉर्न डिजीज़ के आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, माइक्रोबियल प्रोसेस कंट्रोल की को लेकर, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स, इन सब को लेकर एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है. नाउ वी शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स. देखो ये इंडेक्स बहुत ही डायनेमिक है बिकॉज एक तरह का ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेंचमार्क सेट करता है, एक मॉडल देता है जिसमें कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो यूटीज़ हैं, उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है फॉर इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी. दिस इंडेक्स also helps in providing safe and nutritious food to Indian citizens. These science-based standards, parameters of articles of food and to regulate their manufacture, किस तरह वो स्टोर हो रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सेल, इम्पोर्ट, all of this to ensure that there is availability of safe and wholesome food for human consumption. But it is also important for us to know that there are some challenges when it comes to food safety in India. सबसे पहले तो we need good collaboration between government, producers and consumer. इसके थ्रू क्या होगा कि we can ensure food safety and a stronger food system. However, इस तरह की जो collaboration है that is somewhere lacking. Also with urbanization and the changes in the consumer food habits, this has increased the number of people buying and eating food prepared in public places. Urbanization की वजह से और स्पेशली हमारा जो consumer habits में change आए हैं, इससे अब eating food outside or buying or eating food which were prepared in public places, that has significantly increased. Unsafe food containing harmful bacteria, viruses, parasites, chemical substances, they can cause more than 200 diseases which can range from diarrhea to cancers. Now, because this index is released by FSI, Food Safety and Standards Authority of India, it is important for us to know about FSI as well. So, it is established under Food Safety and Standards Act 2006. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत फसाई को इस्टेब्लिश किया गया है. इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. कभी भी इसे एग्रीकल्चर के साथ रिलेट मत कीजिएगा. इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. फंक्शन ऑफ फसाई इज़ टू सेट साइंटिफिकली बेस्ड global benchmark standards for food, to ensure that there is credible food testing going on. There should be compliance to these standards through surveillance and enforcement activities. It is also responsible for promoting and protecting public health through various regulations and supervisions of food safety. It also handles food related issues like ensuring safe availability of food for human consumption. That is all which comes under the ambit of Food Safety and Standards Authority of India, FSI. Lastly, we should also know about World Food Safety Day. So, the World Food Safety Day, it is established by United Nations General Assembly in 2018. मतलब हर साल 7th जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पे मनाया जाता है और ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय UNGA, United Nations General Assembly. And the aim of celebrating World Food Safety Day is to raise awareness of food safety, which is an important issue. So every year on 7th June, WHO along with FAO of United Nations in collaboration with the member states and other stakeholders, but mainly WHO and FAO, they jointly organize World Food Safety Day. And इस साल का जो थीम है, थीम फॉर 2022 इज़ सेफर फूड बेटर हेल्थ. ना इस थीम को आप देखो, सेफर फूड बेटर हेल्थ, दिस बेसिकली हाईलाइट्स द रोल ऑफ सेफ न्यूट्रिशनल फूड दैट इट प्लेज टू इंश्योर ह्यूमन हेल्थ and well-being, and it calls for a set of specific action
to make food safer. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट अमेंडमेंट ऑफ रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CDS. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपॉइंटमेंट के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट की गई है. Recently, Ministry of Defense has issued 3 separate notifications through which they amended the rules of the Army, the Navy, the Air Force for the appointment of next Chief of Defense Staff CDS. This entire article is important from defense point of view. Now यहाँ पे अगर हम इस amendment के major points देखें तो गवर्नमेंट ने आर्मी रूल्स 1954 को अमेंड किया है, द नेवल सेरेमोनियल, कंडीशंस ऑफ सर्विस मिसलेनियस रेगुलेशंस 1963, एयरफोर्स रेगुलेशन 1964, इन सबको अमेंड किया है. एंड बेसिकली टू ऐड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट so to do appoint as CDS an officer who is serving as the lieutenant general or vice admiral or air marshal or general admiral, air chief marshal, or an officer who has retired from these ranks but has not attained the age of 62 on the date of appointment. ये amend किया गया है. It said that now government can extend the service of CDS for a period as it may deem to seem necessary to the maximum age of 65. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रैक्टिकल उसमें देखें कि जितने भी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स और इक्विवेलेंट रैंक्स इन नेवी एंड एयरफोर्स जो भी जून 2020 के बाद रिटायर हुए हैं वो सब एलिजिबल हो जाते हैं. ऑल ऑफ देम आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS. इस मूव को लेकर कुछ एक्सपेक्टेड इम्प्लीकेशंस भी हैं, लाइक इट काइंड ऑफ थ्रो ओपन द फील्ड ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट बिकॉज नाउ गवर्नमेंट कैन लुक बियॉन्ड द सर्विंग ऑफिसर्स, क्योंकि इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स की बात की गई है. तो अब गवर्नमेंट जो सर्विंग ऑफिसर्स के बियॉन्ड भी देख सकते हैं फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट. बट दिस कैन बी ट्रिकी स्पेशली गिवन दैट जो सर्विंग चीफ्स हैं who are 4-star officers will now have to report to a retired 3-star officer if he is named as Chief of Defence Staff. सिंपल शब्दों में तो यही है. पहले जो सिर्फ सर्विंग थे उनमें से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चूज़ किया करते थे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं दे ऑल्सो बिकम एलिजिबल. तो यहाँ से अब नाउ बिकॉज CDS इज़ इन न्यूज़ यू शुड नो some things about Chief of Defence Staff as well. So a high level committee, it was set up to examine the gaps in India's security system. Especially कारगिल वॉर 1999 के बाद इस हाई लेवल कमेटी को सेटअप किया गया कि इंडिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें आप गैप्स को एग्जामिन कीजिए. एंड इस कमेटी ने रिकमेंड किया दैट वी नीड टू अपॉइंट अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्ट्री. डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र के जैसे काम करेगा कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. एंड देन in 2019 Prime Minister Narendra Modi announced the creation of this post of Chief of Defence Staff during his Independence Day speech in 2019. अब दिसंबर 2021 से लेकर ये जो पोस्ट है ये वेकेंट रही है, जिसकी वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो भी स्लो डाउन हो चुके हैं, स्टॉल हो चुके हैं. सो नाउ CDS की इस पोस्ट को फिल करने की बात चल रही है एंड दिस अमेंडमेंट कम्स इन द लाइट जिसके अंदर अब रिटायर्ड ऑफिशियल्स को भी एलिजिबल कर दिया गया है. आफ्टर दिस वी शुड नो द मैंडेट ऑफ CDS. CDS is the primary military advisor to the government. It also includes creating jointness among the armed forces. जो different armed forces हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच में एक जॉइंटनेस क्रिएट करना, द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स,
प्रायोरिटाइजिंग कैपिटल एक्विजिशन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फोर्सेस, ये सब किसके मैंडेट में आता है? सीडीएस के मैंडेट में आता है. And it was created as a dual-hatted role, okay? Because Sirius was appointed as a secretary to the Department of Military Affairs. इसके अलावा एक और मैंडेट जो सीडीएस के पास है, दैट इज़ टू फैसिलिटेट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड, जिसमें बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, एंड ऑल्सो बाय ब्रिंगिंग द जॉइंटनेस इन द ऑपरेशंस, एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द थिएटर कमांड्स. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन जॉब्स के बारे में है. वेल, दिस एंटायर इशू इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो ग्रीन जॉब्स आर इन न्यूज़ एज रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर mentioned India's efforts to create green jobs. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए that what are green jobs. Green jobs है क्या? तो green jobs basically it's a class of jobs that directly have a positive impact on the planet. ऐसी jobs, ऐसी class of jobs जिनका planet के ऊपर positive impact है and they contribute in the overall environmental welfare, such jobs are called as green jobs. ऐसी कौन सी jobs होंगी जिनका planet के ऊपर positive effect है और वो overall environmental welfare में contribute करते हैं? Jobs जिसमें renewable energy involve होती है, to conserve the resources, to ensure energy efficiency, all of these comes under the category of green jobs. Now, इसका भी aim क्या है? The aim of producing green job is to reduce the negative environmental impact of the economic sector. Economic sector का जो environment के ऊपर negative impact हो रहा है उसे reduce कर पाएंगे. Further, this will also create a low carbon economy. इससे हम low carbon economy भी generate कर पाएंगे. See, हम हमेशा जब भी इन्वायरमेंट की आजकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो ये जो टर्म है ये बहुत कॉमनली आती है, लो कार्बन इकोनॉमी, डीकार्बोनाइजेशन. सो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट? सी, द आइडिया बिहाइंड लो कार्बन इकोनॉमी और डीकार्बोनाइजेशन is about maintaining a sustainable economy. One does not, that does not lead to vast emission of greenhouse gases, especially carbon dioxide. वो जो इकोनॉमी होगी, सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन उतनी नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें बहुत कम रिलीज़ हो रहा है, दैट इकोनॉमी इज़ कॉल्ड एज लो कार्बन इकोनॉमी और डीकार्बोनाइजेशन. सो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ग्रीन जॉब्स होती क्या हैं. नाउ लेट्स सी सम ग्रीन जॉब्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. हमारे पास जो इंडिया के एफर्ट्स हैं टू जनरेट ग्रीन जॉब्स, एक बार उनकी तरफ देखते हैं. यूनियन गवर्नमेंट ने 2015 अक्टूबर 1 2015 में द स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स लॉन्च किया था. द स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, दिस वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2015. Further, this skill for green jobs, this was aligned to the National Skill Development Mission, and it was basically said to be a not-for-profit, independent, industry-led initiative. ठीक है. इसके बाद इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे प्रमोट किया. साथ ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है, इंडियन इंडस्ट्री जो है, उन्होंने भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया. The Skill Council for Green Jobs. Now, what is the aim of it? The aim of the Skill Council for Green Job is to help the manufacturers and other service providers in India towards, basically जो इंडिया का ग्रीन बिजनेस सेक्टर है, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, they should implement these industry-led or collaborative skills that will push our country onto the path of truly realizing the real potential and the significance of green jobs. इसको लेकर
ग्रीन जॉब स्किल्स को लेकर देयर शुड बी अवेयरनेस. जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. एंड इससे ये इंश्योर करना चाहिए कि किस तरह ग्रीन हाउस गैसेस का जो रिलीज़ है वो लिमिट कर पाएँ. हाउ टू मिनिमाइज वेस्ट एंड पोल्यूशन, हाउ टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर आवर इकोसिस्टम, how to support or adaptation in terms of the effect of climate change. इन सब की लाइट में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें अवेयरनेस आए, वो ट्रेन हो. दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ ग्रीन जॉब्स. Also, according to International Labour Organization, now India is moving towards a green economy, by the next decade, and it would alone create 3 million jobs in the renewable energy sector. तो जो renewable energy sector है, अगर इसकी तरफ हम देखें तो 2017 में 47,000 न्यू जॉब्स renewable energy sector के थ्रू जनरेट हुई थी, and which basically accounted for 12% increase, in just the span of year. So for India, green jobs can, prove immensely useful for our country. Renewable energy, waste management, green transport, urban farming, all of these have a great potential, जिसमें आपकी जो वर्कफोर्स है आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, and you can convert it into a green job. The way India is taking decisions in the interest of environment and implementing them rapidly, it is also generating a large number of green job opportunities also. अब आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीन जॉब्स को लेकर क्या सिनेरियो है वो भी थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ी पिक्चर और आपकी इससे क्लियर होगी. यहाँ पे हम UNEP की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन 2019 जो इमिशन गैप रिपोर्ट आई थी, इसमें ये इंडिकेट किया गया दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू रिड्यूस बाय 7.6% पर एनम. हर साल जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है इसे रिड्यूस करना होगा बाय 7.6%. Especially the years between 2020 and 2030 in order to reach the targets that were set during Paris Agreement. Failing to meet the same, अगर हम ये targets achieve नहीं करते, this will result into a failure to effectively combat the global warming. So over here, decarbonized economy plays a very important role, and to ensure that we have a greener, safer, healthier and more sustainable planet to inhabit. Also globally there are multiple initiatives जिसके through जो green job sector है उसे लेकर different initiatives हैं. यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की बात करें, UNEP, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, all of them they collectively launched green job initiative in 2008. ILO, International Trade Union Confederation, UNEP, इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर एक ग्रीन जॉब इनिशिएटिव लॉन्च किया है in 2008. Again, the aim of this initiative is to having better placements, training and to create opportunities for individuals to work in green jobs. यूनाइटेड किंगडम की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, इट इज़ लाइकली दैट दे विल गिव अराउंड 6,94,000 ग्रीन जॉब्स बाय द ईयर 2030, एंड जिसमें ग्रीन इकोनॉमी को लेकर दे आर प्रोजेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ 11% इंक्रीज पर ईयर. सो ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल एज ग्लोबली. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट कार्बन बॉम्ब्स. सो कार्बन बॉम्ब इज़ इन न्यूज़ as recently a group of environmentalists, lawyers and activists, they have come together to identify and diffuse carbon bombs. कहीं coal, oil, gas projects, those areas
those things that have potential to contribute significantly to global warming. They are here referred to as carbon bombs. So the group of environmentalists, some lawyers, some activists, they came together to identify as well as to diffuse such carbon bombs. तो अब कार्बन बॉम्ब्स को डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर दीज कार्बन बॉम्ब्स. सो कार्बन बॉम्ब्स, अभी हमने देखा पीछे ऐसे एरियाज़, ऐसी जगहें जो जिनका पोटेंशियल है एमिशन करने का, उनको आप कार्बन बॉम्ब कह रहे हैं. सिमिलरली, it is an oil or gas project that will result in at least 1 billion tons of carbon dioxide emission over its lifetime. कोई ऑयल प्रोजेक्ट है, कोई गैस प्रोजेक्ट है, अगर वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एटलीस्ट इतनी करता है, तो दैट इज़ रेफर टू एज कार्बन बॉम्ब. अब देखो, जब भी आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स इन पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो पहले तो एक्सट्रैक्शन लेवल पे ही इमिशंस रिलीज हो गई. Secondly, when you burn these fuels, then also carbon dioxide, carbon emissions, they take place in particularly largely amount. Now, अगर हम टोटल देखें तो अभी तक 195 ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है. दिस इंक्लूड्स US, रशिया, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जहाँ से ये कार्बन बॉम्ब्स को आइडेंटिफाई किया गया है. And they will collectively overshoot the limit of emission that has been agreed in the Paris Agreement 2015. 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो फिक्स किया है कि we won't let it overshoot the limit of emission, अगर हम इन सबको मिला लें तो ये बहुत आराम से कलेक्टिवली उस लिमिट को ओवरशूट करता है. इन पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 वी एग्रीड, इस एग्रीमेंट में हमने ये तय किया था कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जो राइज हमें देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में, उसे हम ऑन एन एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे एंड वी विल स्ट्राइव फॉर अ टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल. दिस इज समथिंग दैट पेरिस एग्रीमेंट 2015 कंटेन्स. तो 2 स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो कार्बन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करना. तो अभी हमने हमारे लास्ट में देख लिया कि कार्बन बॉम्ब्स आइडेंटिफाई हो गए हैं. वो सभी एरियाज़ जहाँ में पूरे लाइफ टाइम में 1 बिलियन टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होगी. अब बात आती है हाउ टू डिफ्यूज़ द कार्बन बॉम्ब्स. तो जो नेटवर्क है, इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल, जिसे कहते हैं लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव. डिफ्यूजिंग कार्बन बॉम्ब्स के लिए एक ये नेटवर्क बनाया गया है, जी ये गोल जो है तय किया गया है, विच इज़ कॉल्ड एज लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव. नाउ इसका मिशन क्या है? सो द मिशन इज़ कि ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो कि कार्बन बॉम्ब आइडेंटिफाई हुए हैं, जस्ट लीव देम इन द ग्राउंड एंड लर्न टू लिव विदाउट देम. आप उनको यूज़ ही नहीं करेंगे. Because see, they strongly believe that the root of climate change is the burning of fossil fuel, and 100% use of renewable energy sources is the solution. And so how will you diffuse these carbon bombs? By leaving it in the ground and learning to live without them. And it has listed projects from all over the world. इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पे, वो आपको पता होने चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं. सो दिस इंक्लूड्स अ कार्मिकेल कोल प्रोजेक्ट विच इज़ ओन्ड बाय अडानी ग्रुप. ऑल्सो गेवरा कोल माइंस इन छत्तीसगढ़ विच इज़ ओन्ड बाय कोल इंडिया. एंड देन राजमहल कोल माइंस इन द ईस्टर्न झारखंड, followed by eastern coal fields. These are some of the identified carbon bombs in India. और किस तरह डिफ्यूज़ किए जाएंगे? By leaving it in the ground. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.